Welcome back, students, in a new video where I'm going to discuss about water. So this is the 14th chapter of class 6, and here we are going to discuss and understand about water, its importance, its uses, and what is the role water plays in our life. So let's start with this. So over here, we are going to discuss about these topics. So here are the topics. You can see that water is important for us. Why do we see that water is important and what are the unique nature of water? Then we will understand about the states of water and its changes, the sources of water, evaporation and transpiration, the two important components which we use to observe for water. Then we will understand about water cycle and the effects of water when it is not there, such as the drought and the flood. And then we will understand that what is water conservation, why we should do that, and one of the method of water conservation as rainwater harvesting. सो जब हम लोग वाटर के बारे में समझते हैं तो वाटर हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्स के रूप में जाना जाता है, समझा जाता है। तो इसलिए हम लोगों को वाटर को समझना बहुत जरूरी है। उसके यूजर्स के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में, उसके सोर्सेस के बारे में, हमको वो कैसे ऑब्टेन होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट फॉर दैट। सो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो वाटर हम लोगों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है? See, students, when we come for water, then we need to understand this thing that water plays a very important role in our body. If there is less water or there will be lack of water in our body, then our body will not be able to work properly because the functioning of our body completely depends on water. हम लोग के और किसी दूसरे काम के लिए बाद में पानी की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो हम लोगों के खुद के बॉडी को फंक्शनल बना के रखने के लिए, यानी वो वहां पर सही तरीके से काम करे, उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर वाटर हम लोगों को सही तरीके से नहीं मिलेगी, अगर हमारे बॉडी में सही अमाउंट में वाटर नहीं रहेगा, तो काफी सारे तरह के प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिल सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों के बॉडी टेम्परेचर में इरेगुलरिटीज आ जाएंगी, हम लोगों के बॉडी में डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगी, हम लोगों के बॉडी ऑर्गन्स जो होंगे वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे, हम लोगों के सेल में ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंचेगी, जो वेस्ट जो थ्रो आउट होना होगा वो नहीं हो पाएगा। इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग फेस कर सकते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। सो अगर हम लोग वाटर की इंपॉर्टेंस देखते हैं तो हम लोगों के बॉडी में वाटर की जो प्रेजेंस है वो हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारे बॉडी में सही सही अमाउंट में, सही क्वांटिटी में अगर पानी की प्रेजेंस नहीं होगी तो हमारा बॉडी फंक्शनिंग करना बंद कर देगा या वो सही तरीके से फंक्शनिंग नहीं करेगा। यहाँ पर चाहे हम लोग उसके उसके न्यूट्रिएंट्स की बात करें, चाहे ब्लड सर्कुलेशन की बात करें, चाहे जो हम लोगों के बॉडी की रेगुलर डिस्पैचिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स है, उन सब के बारे में बात करें, उन हर चीज तरह के कामों में हम लोग देख सकते हैं वाटर की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। और इसीलिए यहाँ पर कुछ बेसिक से रीजंस के साथ हम आए हुए हैं, जहां पर तुम लोगों को बताया जा रहा है कि बेसिक रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पर हम लोगों के वाटर की होती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 10 रीजंस दिए हैं जिसके बेसिस पर हम लोग समझ सकते हैं कि वाटर की हम लोगों की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सो वाटर कीप्स आवर ऑर्गन्स हेल्दी। सो व्हेन वी कम फॉर द वाटर, देन व्हेन वी कंज्यूम द वाटर फॉर in a right amount and in a right quantity, in a clean water we used to consume, then we used to observe this thing that it keeps our organs functionable, it keeps our organs in such a kind that it gives us energy and it help our body to maintain its balance in each and every way. So you can see over here I can given this figure where you can understand that how our body requires water. So it has been said like this thing that our body's 70% mass is water, यानी हमारे बॉडी का जो मास जो है, टोटल मास जो है, उसका अप्रॉक्स 70% जो है वो सिर्फ पानी है। तो ये पानी कहाँ कहाँ पर यूज होती है? तो हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में इसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं तो ब्रेन में अप्रोक्सीमेटली 74.5% जो ब्रेन का मास है उसका अप्रोक्सीमेटली वहां पर पानी है। फिर अगर हम लोग टोटल ब्लड का मास कैलकुलेट करते हैं या काउंट करते हैं तो उसका 83% जो है वो सिर्फ पानी है।
In the same way, you can go for the kidney, liver, fat, bones, joints, skin, lungs, heart, or muscles. Everywhere we can see water. So water is very, very important for the functioning of our body. So if we are not getting water in a right amount, if we are not consuming the water in a right amount, then our body will not be able to work in a proper manner. That is the thing which we need to understand. And that is the thing which we have to remember every time, because if we are not consuming water in a right amount, then we are actually creating lack of water in our body. And if there would be lack of water in our body, then there will be so many different kinds of diseases which we will come across. तो ऐसे बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं जिनको कि हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं जस्ट ओनली ड्यू टू द consumption of either impure water or not been consuming water in a right amount. The next condition which we go for this thing over here, we can say that that water prevent us from fatigue. Means if we are not consuming water in a right amount, then we will become weak. हम लोग अगर सही अमाउंट में पानी के कंजम्पशन नहीं करते हैं तो हम लोग थक जाएंगे और किसी भी तरह के काम को हम लोग सही तरीके से कर नहीं पाएंगे, हम लोगों को एनर्जी की एहसास नहीं होगी, तो ये एक प्रॉब्लमेटिकल सिचुएशन क्रिएट हो सकता है. Then we come for this thing that water is necessary for washing and sanitization. So whenever we are going for cleaning anything or washing anything, over there we need water. Without water we will not do it that. हम लोग जब भी किसी भी चीज को धोना है, साफ करना है, तो वहां पर पानी की रिक्वायरमेंट होती है. Next we can see that we need water for our cooking purpose also. So when we are going for the cooking food, whatever kind of food you are cooking, except you and you are not eating it raw, you have to cook it over there. So whenever you are cooking food, then you require water. So it depends on the method of cooking what you are using over there. According to that, the amount of water may change over there. इन तुम जो भी चीजों को पकाते हो उसके तरीके के बेसिस पर हम लोग देख सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो वहां पर डिफरेंट हो जाती है. Now water is necessary for growing food also. So when we come for the farmers, then they need water for their irrigation purpose. जितने भी किसान खेती करते हैं, जो भी तरह के अनाज उगाए जाते हैं, फसलों को किया जाता है, उगाया जाता है, उन फसलों को उगाने के लिए, उन अनाजों को उगाने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है. तो अगर पानी नहीं होगा तो वहां पर अनाज उगेंगे नहीं सही से, और अगर अनाजों को सही तरीके से उगाया नहीं जाएगा तो हम लोगों के लिए खाने की हम लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा, तो ये एक प्रॉब्लम वहां पर हो सकता है. Raising animals requires water, so there are people who used to raise animals also, such as for example the cowman, the milkman who used to come to your home to give you the milk. They used to have cows or buffaloes, so they need to feed them also. So if they will not be having water in the right amount, then you will not be able to get the milk also, and they will not be able to make them survive also. So that's why we need water for that purpose. Now next we have to take water to produce energy. So at different places we are using water for producing energy, such as for example hydropower plants. पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग को एनर्जी भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है. बहुत सारे ऐसे पावर प्लांट्स हैं जहां पर कि हम लोग देखते हैं कि एक ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, एंड दैट इज आल्सो बाय रनिंग वाटर. जो पानी वहां पर स्टोर होती है, रिजर्वायर्स में पानी को स्टोर किया जाता है, फिर उसके पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है काइनेटिक एनर्जी में, और फिर काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसके बारे में हम लोग आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे. तो पानी की सिर्फ रिक्वायरमेंट हम लोगों को खुद के बॉडीज के लिए नहीं है, बल्कि हम लोगों के जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करने के लिए पानी हम लोगों को चाहिए होता है. Next, we need to have water in a right amount so that we can go for different kinds of medical procedures also. So when doctors used to go for some specific kind of cleaning of our body parts or some kind of a specific work, over there also water is required. हम लोग के शरीर में जब डॉक्टर कुछ तरह के क्लीनिंग पर्पसेस करते हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं, वहां पर भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो बिना पानी का वो नहीं किया जा सकता है. Then clean water prevent fatal diseases. So ऐसे बहुत सारे तरह के diseases हैं जिससे कि हम लोग बच सकते हैं अगर हम लोग सही amount में पानी का consumption करेंगे. So students, please remember this thing. If you will drink a rightful amount of water and clean water, then you can save at least 70 to 75% of different kinds of diseases not to come to your
बॉडी, तुम लोग करीब करीब जितने भी डिजीजेस होते हैं उसमें से 70 to 75% डिजीजेस को तुम लोग अवॉइड कर सकते हो अगर तुम लोग सही अमाउंट में पानी का कंजम्पशन करोगे और साफ पानी का कंजम्पशन करोगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पानी कंज्यूम कर लेना, अगर हम लोग बहुत सारा पानी कंज्यूम कर लेंगे तब भी वहां पर हम लोग के लिए प्रॉब्लम ही होगी। तो ऐसा भी नहीं करना है कि हम लोग को ढेर सारा पानी कंज्यूम कर लेना है एक ही बार में, और अगर ऐसा करते हैं तो भी हम लोग के लिए प्रॉब्लम है। हम लोग को राइट अमाउंट में पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए यहाँ पर हम अलग अलग एज ग्रुप को भी दिए हुए हैं कि किस एज ग्रुप में पानी की, हम लोग की बॉडी में पानी का कितना अमाउंट होता है, और उस बैलेंस को बनाए रखना हम लोगों के लिए काफी जरूरी है। अगर उस बैलेंस को अगर हम लोग नहीं बनाते हैं तब हमारे बॉडी में इरेगुलरिटीज आने लगेंगी, और उन इरेगुलरिटीज के लिए काफी सारे तरह के प्रॉब्लम्स या काफी सारे तरह के डिजीजेस उसके बाद उसके साथ कोरिलेटेड होते हुए आती चली जाएंगी। The next thing is that it is our right that we should get clean water. So governments are actually bounded to have this thing. So हम लोगों के पास ये अधिकार है हमारा कि हमें साफ पानी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि देखो जब भी किसी भी ग्रुप के बारे में बात करते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजियस बैकग्राउंड से हो, किसी भी कंट्री से हो, किसी भी जगह से हो, हर किसी को तो वाटर चाहिए ही चाहिए। ऐसा तो कोई नहीं होगा जो कि बोलेगा कि नहीं हमें पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। वी ऑल रिक्वायर वाटर। यस, इट मे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये हो सकता है कि एक एक अलग अलग लोगों में अलग अलग पानी की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन हर किसी को पानी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। अगर हमें पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो हम अपना लाइफ को सस्टेन ही नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा एक मूलभूत अधिकार है, और जो गवर्नमेंट्स ऐसा काम करती हैं या फिर इसको बनाए रखने के लिए अलग अलग तरह की मेहनत कर रही हैं। गवर्नमेंट्स कई सारे प्रोजेक्ट्स ला रही हैं जिसके बेसिस पर हर व्यक्ति तक साफ पानी पहुंचाया जा सकता है। So that is the work of government, but we have to understand about some more things related to water. Now let's understand about the unique nature of water. तो वैसे तो पानी को जब हम लोग स्टडी करते हैं, यानी वाटर को जब हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं जिनको कि हम लोगों को समझने की जरूरत है। जब हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझेंगे, जहां पर कि हम लोगों को पता है कि जब वाटर को हम लोग केमिकली लिखते हैं तो ये हो जाता है 2H2O। So over here we can say in a simple word that two atoms of hydrogen combines with one atom of oxygen to give us the condition. So over here we can write simply, we can write H2O also, that two atoms of hydrogen is combining with one atom of oxygen, but we go for it as 2H2O. Why? Because it gives a good molecular formula, and this molecular formula is used in different studies, but very general or in a very common way. When we are representing for the water formula, then we go for H2O only. ओके ना, जब हम लोग इसके इस केमिकल फॉर्मूला को समझेंगे, इसके कई सारे अलग अलग कैरेक्टर्स को हम लोग जानेंगे। अभी फिलहाल जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट सम वेरी बेसिक फिजिकल नेचर्स ऑफ वाटर। सो ओवर हियर वी कैन डिस्कस फॉर दिस थिंग दैट वाटर इज अ कलरलेस टेस्टलेस लिक्विड। तो वाटर जो है वो एक कलरलेस और टेस्टलेस लिक्विड होती है, यानी इसमें ना ही खुद का कोई रंग होता है, ना ही इसका खुद का कोई टेस्ट होता है। वैसे तो अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज ऑर्डरलेस ऑल्सो, मीन्स इट डजंट हैव एनी स्मेल ऑफ इटसेल्फ ऑल्सो, मतलब इसकी खुद की कोई स्मेल भी नहीं होती है। तो ये भी हमें जानने की जरूरत है। तो जब हम लोग वाटर को समझते हैं, देखते हैं, तो हम लोग वाटर में इस तरह के कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Some students used to ask that, sir, we used to observe that at some places we have the water with little bit of yellowish color or little bit of oranges color. So what does that means? Then how we can say that it is colorless? So students, ये ध्यान रखना कि जब हम लोग ये बोलते हैं कि पानी की कोई कलर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम प्योर वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, प्योर वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा बहुत सारे जगहों पे देखा जा सकता है कि पानी थोड़ा सा येलो कलर का है, या थोड़ा सा ऑरेंज कलर का है, या थोड़ा सा रेड कलर का है। So why that is? That is because of the presence of dissolved minerals in that one. So at some places the amount of mineral is high, and some places it is
less. So as per to the depending on the minerals or the components which has been dissolved in the water, you can observe that the color of the water can be a little different from one to another. But when you go for the pure water which you can obtain at different sources, so over there you will find that it is colorless and the tasteless is also. So पानी की खुद की कोई टेस्ट नहीं होती है, लेकिन जो पानी तुम लोग कंज्यूम करते हो घर में, such as from as the source of tubewell or from the groundwater, जो अलग अलग जगहों से जो पानी लेते हो उसमें एक थोड़ा सा टेस्ट होता है. And then again, why? It is because of the minerals which is dissolved over there. If you go for distilled water, then you will observe that it is completely tasteless. तो अगर distilled water को अगर तुम लोग पीते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो completely तुम लोगों को tasteless तुम लोगों को लगेगी. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें और extra कोई mineral dissolve नहीं होता है. Next thing which we need to understand for water, that is it is a universal solvent. So we observe this thing that, or we call water as a universal solvent because it can dissolve numerous components inside it. So जब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन बनाने की बात, तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है सॉल्यूशन के बारे में. तो सॉल्यूशन क्या होता है? जब किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग जो शुगर क्रिस्टल्स हैं उसको वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, तो जो शुगर है वो सॉल्यूट हो जाता है और वाटर वहां पर सॉल्वेंट हो जाता है. ठीक उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसको कि हम लोग वाटर में इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं. हेंस वी कॉल वाटर as a universal solvent, but it is not like that it can dissolve each and everything, but a lot of things can be dissolved in it. And else than that, there are also so many other properties which we will come across when we will go for in the higher classes, such as, for example, the surface tension of the water molecule, due to which it can form as in the droplet of water. We will understand about its high specific heat capacity, because of which it can store a large amount of heat. So these properties we will come across when we will see for when we will discuss it in water or about water in our higher classes. तो हम लोग अपने higher classes में water के बारे में जब और जानेंगे तब हम लोग उन properties को समझेंगे. अभी फिलहाल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को समझना है यहाँ पर, वो हम लोग समझेंगे एज अ different states of water. Now see students, Earth is a unique planet among all the planets, whatever we still had found out, or whatever we had studied now, with different reasons. There are different reasons on which we can say this thing, that our Earth is unique in itself. But one of the main component which we can say that our Earth is unique, that water is existing over here in its all three states. Okay, we had discussed this thing that matter used to have its basic three states. हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि मैटर का तीन बेसिक सा स्टेट होता है, जो फिजिकल स्टेट जिसको हम लोग कहते हैं एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. So water do also have its states, solid, liquid and gas. But with this one more thing I want to clarify over here, that the students do have confusion in that one also, that do all matter exist in its all three states? Means all matter can be exist in its solid, liquid and gaseous state? No, it is not like that. Those kind of components which can transmit heat or which can work with the heat, they can be able to only convert their state or their physical state from one to another. So either from solid to liquid or liquid to gas. There are two other states also, the plasma and the Bose-Einstein, that you will study again in your higher classes. But over here, जब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो जैसा कि बता रहे थे कि धरती एक यूनिक प्लैनेट है, तो इसमें ऐसे तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रीजन के रूप में अगर हम लोग देखते हैं तो पानी की अवेलेबिलिटी यहाँ पर अपने तीनों ही स्टेट में होती है. वैसे तो वाटर का डिस्कवरी बहुत सारे अलग अलग प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स में भी हुआ है, बट दे ऑल बीन फाउंड टू बी एज इन द सॉलिड फॉर्म. जितने भी जगहों पर अभी तक वाटर की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, उन सभी जगहों पर पानी जो है वो सॉलिड स्टेट में है.
लेकिन धरती ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर कि पानी की जो प्रेजेंस है वो अपने तीनों ही स्टेट्स में मौजूद है, यानी वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों ही स्टेट में मौजूद है। और इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन है कि हमारे धरती पर पानी अपने तीनों ही फॉर्म्स में इंटरकनेक्शन या इंटर कन्वर्जन में जाती रहती है, यानी वो एक से दूसरे में वो बदलती चली जाती है। तो जब हम लोग किसी भी मैटर के स्टेट को बदलता हुआ देखते हैं, यानी जब भी कोई भी मैटर अपना अपना फिजिकल स्टेट बदलता है, तो वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, तो उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म जो यहाँ पर हम तुम लोगों के लिए दिए हुए हैं, दैट इज फ्रीजिंग। So what is freezing? Freezing is a process where we observe that if a liquid substance is there and if we cool it down, then it can convert to its solid form. तो अगर कोई लिक्विड कंपोनेंट है, उसको अगर हम लोग ठंडा करते हैं, उसके 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 हीट को अगर हम लोग अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो उसका टेम्परेचर गिरता है। तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर गिरता है, तो हम लोग देखते हैं कि वो अपने लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, एक चीज स्टूडेंट्स प्लीज याद रखना, जब भी हम लोग किसी भी मैटर के फिजिकल स्टेट में चेंजेस को देखते हैं, सो दैट यूज्ड टू बी डन आइदर बाय द चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट और बाय द चेंज इन द अमाउंट ऑफ प्रेशर। तो ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिसके वजह से हम लोग किसी भी मैटर के फिजिकल स्टेट को चेंज होता हुआ स्टडी करते हैं। तो अभी जो तुम लोगों को समझना है, बेसिकली हीट को लेकर समझना है, फिर प्रेशर के बारे में भी आगे के क्लासेस में डिस्कस किया जाएगा। तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रीजिंग प्रोसेस, इसमें भी हीट का ही इंपैक्ट है। जब किसी भी बॉडी से, जैसे कोई लिक्विड है, जैसे पानी ही है, अगर उसमें से अगर हम लोग हीट को निकाल लें, हीट निकालने का मतलब उसमें से हीट अगर एब्सॉर्ब कर लिया, उसको कूल डाउन किया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो अपने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो फेनोमिना होगा, ये जो कन्वर्जन होगा लिक्विड से सॉलिड में, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग। And I hope everyone remember that the freezing point of water is 0 degrees Celsius. Now the next point which we have to see, that is the melting. So it is just the reverse of freezing, where we used to observe that the solid converts into its liquid form. यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो solid है वो अपने liquid form में convert हो जाता है on heating. तो जब हम लोग सॉलिड आइस लेंगे और अगर उसको हम लोग गर्म करते हैं, तो वो क्या होती है, वो अपने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और इस फेनोमिना को हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट वेपोराइजेशन। सो इफ वी आर हीटिंग द लिक्विड, then it gets converted into gaseous form, which is called to be as vaporization or evaporation process. So both the processes can be said to be as the same one only. तो vaporization process होता है जब लिक्विड को गर्म करके उसके gaseous state में convert कर दिया जाए। Next, we have to understand about the condensation process, where do we observe that it is the reverse of the vaporization. Means if we are cooling the gas, if we make the heat out of the gas, अगर हम लोग गैस को ठंडा करते हैं, उसमें से हीट निकाल लेते हैं, तो वो अपने लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस फेनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन का प्रोसेस कहते हैं। Next, out of these points, we also need to understand these two things, that is the sublimation process and the solidification process. So even though water doesn't support the sublimation and solidification process, but then also I had used these two terms over here. देखो, पानी में तो सब्लिमेशन या सॉलिडिफिकेशन नहीं होता है। जब हम लोग वाटर के बारे में स्टडी करते हैं, तो वहां पर फ्रीजिंग देख सकते हैं, मेल्टिंग देख सकते हैं, वेपोराइजेशन देख सकते हैं, कंडेंसेशन देख सकते हैं, ये सब तो देख सकते हैं, लेकिन सब्लिमेशन और सॉलिडिफिकेशन वहां पर नहीं होता है। लेकिन इन टर्म्स के साथ तुम लोगों को इसको भी याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये टर्म्स तुम लोगों को आगे भी यूज होगी। तो सब्लिमेशन होता क्या चीज है? तो सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस वेयर डू वी ऑब्जर्व दैट अ सॉलिड गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड टू इट्स गैसियस फॉर्म ऑन हीटिंग। तो जब किसी सॉलिड को हम लोग गर्म करते हैं और वो अपने गैसियस स्टेट में सीधे सीधे चले जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन का प्रोसेस। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल नेप्थोलिन बॉल्स, तो तुम लोगों ने देखा होगा, तुम्हारे घर में भी नेप्थोलिन बॉल्स होंगे, तो उसको अगर तुम लोग खुले हवा में रख दोगे, तो वो कुछ दिनों के बाद वो वहां से डिसअपियर हो जाएगा। सो व्हाई इट इज सो, और यू मे सी दैट इट्स साइज कैन डिक्रीज डाउन। दोनों में से कोई भी चीज हो सकता है, यानी उसका साइज छोटा भी हो सकता है या फिर वो कंप्लीटली डिसअपियर भी हो जाएगा। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो है वो रूम टेम्परेचर पे वेपोराइज हो रहा है, वो अपने गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होते चले जा रहा है बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए।
So that is the condition of sublimation. The next thing is the solidification. So when we come across for the solidification, it is reverse of sublimation. ये sublimation का reverse है. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो gases हैं उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं सीधे सीधे सॉलिड स्टेट में विदाउट बीइंग कन्वर्टेड टू इट्स लिक्विड फॉर्म. सो सच एज फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड. मान लो कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड में काफी ज्यादा प्रेशर देते हैं किसी एक चेंबर में डालकर, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, जिसको कि हम लोग ड्राई आइस कहते हैं. बट इट इज अनस्टेबल कंडीशन. एज सून एज वी रिमूव द प्रेशर स्लोली इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस फॉर्म. बट दैट इज आल्सो द थिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाइल वी डिस्कस अबाउट द चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ अ मैटर. तो जब हम लोग किसी भी मैटर के फिजिकल स्टेट में चेंजेस देखते हैं तो इन पॉइंट्स को हम लोगों को याद रखने की जरूरत होती है. ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सोर्सेज ऑफ वाटर. हम लोगों को पानी कहाँ कहाँ से मिल सकता है. तो देखो, जब हम लोग पानी के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि हम लोगों को पता है, हम लोगों ने ज्योग्राफी में ये पढ़ा हुआ है कि हम लोग के धरती के एक बहुत बड़े हिस्से में वाटर की प्रेजेंस है. अगर वाटर को देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली बोला जा सकता है 2/3 ऑफ द होल अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. ओके. जिसमें कि जो बड़े वाटर बॉडीज है वो रिवर, वो सी या ओशन के रूप में है. तो सी या ओशन के रूप में हम लोगों को सबसे बड़े स्टॉक ऑफ वाटर तो मिल जाता है, लेकिन ये पानी हम लोगों को सीधे सीधे इस्तेमाल लायक नहीं है. मतलब हम लोग इसको सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. जैसे कि हम लोग के डे टू डे लाइफ के लिए जो हम लोगों को वाटर चाहिए है वो फ्रेश वाटर चाहिए है, या फिर जो फार्मर्स को पानी चाहिए है अपने इरिगेशन को पर्पस करने के लिए, उसके लिए फ्रेश वाटर चाहिए. वो हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि सी वाटर या ओशन वाटर जो है वो सलाइन वाटर होता है, खारा पानी होता है. हाँ, ओशन वाटर का हम लोग इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर सकते हैं. किसी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए जो वाटर वेज होती है उसमें सी या ओशन का पानी हम लोग के लिए हेल्पफुल होता है. साथ ही साथ सी और ओशन का पानी हम लोगों को एनर्जी जनरेट करने में भी हेल्प करता है. टाइडल एनर्जी is the method by which we can produce electricity also. But for day to day purpose we need fresh water. हम लोगों को अपने डे टू डे पर्पसेस को पूरा करने के लिए फ्रेश वाटर चाहिए, और इसके लिए हम लोग रिवर्स के ऊपर बेसिकली डिपेंडेंट हुआ करते थे एट द वेरी बिगिनिंग. यानी जब हम लोगों की सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रही थी उस दौरान अगर देखते हैं तो जितनी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस हैं वो किसी न किसी बड़े नदी के किनारे ही बसी थी, क्योंकि वहां से उनको वो पानी मिल जाता था, और उस पानी का यूज जो है वो अलग अलग तरह के पर्पसेस को पूरा करने के लिए वो करते थे. और उसका इस्तेमाल न केवल सिर्फ अपने डे टू डे पर्पसेस के लिए बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी किया जाता था. और ये रिवर वाटर हम लोगों को कहाँ से मिल जाता है, तो आइदर फ्रॉम द रेनफॉल और द वाटर व्हिच कम्स फ्रॉम बाय द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स. जो पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर्स है उसके पिघलने से हम लोगों को पानी मिल जाती है. और ये पानी जो है ये हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, न केवल सिर्फ हम लोगों के अपने पर्पसेस को पूरा करने के लिए, जो हम लोग के रेगुलर डोमेस्टिक पर्पसेस हैं उसको पूरा करने के लिए, बल्कि ये हम लोगों को कई सारे अलग अलग तरह के कामों को करने में भी मदद करती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिसके लिए वाटर एक रॉ मटेरियल के रूप में काम करती है. पानी वहां पे चाहिए है अलग अलग तरह के फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए, आइदर फॉर वॉशिंग पर्पस और फॉर एनी अदर काइंड ऑफ पर्पस दे रिक्वायर वाटर. तो पानी की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के डोमेस्टिक पर्पसेस को ही सेटिस्फाई करने के लिए नहीं होती है, इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए भी जरूरी होती है. तो इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं, रिवर्स के अलावा अगर हम लोग देखते हैं, तो हम लोग के पास ग्राउंड वाटर भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में आती है, जिसका कि आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता चला गया, जैसे जैसे लोग स्प्रेड होते चले गए, जैसे जैसे लोग नदियों से दूर होते चले गए, क्योंकि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ा तो एरिया को ऑक्युपाई करना था, और सारे एरिया जो है वो रिवर के क्लोजर तो थे नहीं, तो वहां पर हम लोग ग्राउंड वाटर के ऊपर आने लगे. तो ग्राउंड वाटर क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जहां से कि हम लोग पानी को ऑब्टेन कर सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लमेटिकल कंडीशन ये है कि आज हम लोगों के अलग अलग एक्टिविटीज के कारण हम लोग रिवर वाटर को पॉल्यूट करते चले जा रहे हैं, ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करते चले जा रहे हैं. और इससे इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? इसका रिजल्ट ये है कि हम लोगों के पास फ्रेश वाटर का जो स्टॉक पहले से बहुत कम है उसमें भी बहुत सारा कमी आती चली जा रही है, जिससे कि स्कर्सिटी ऑफ वाटर हो रही है, जिसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में. फिर हम लोग डिस्कस करते हैं एक और पॉइंट जहां पर कि हम लोग देखते हैं रिवर वाटर के अलावा या ग्राउंड वाटर के अलावा रेन वाटर भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में हो सकता है हम लोगों के लिए पानी. तो वैसे तो ये कंसीडर किया जाता है कि रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर,
But we have to remember this thing also, that because of our human interference, we had created such a condition that we had polluted our atmosphere very badly. So when the water is coming throughout the cloud, it is in the pure form. But when it crosses through the atmosphere, it gets mixed with several kinds of impurities. And because of that impurities, what do we observe? That the water is not containing any kind of minerals, or not contain its purity. It gets converted into a poisonous component. ठीक है, तो जब हम लोग देखते हैं कि बारिश जो है वो होती है, तो जब क्लाउड से पानी निकलता है तब तो वो प्योर फॉर्म में है, लेकिन आगे चलते चलते वो एटमॉस्फेयर से जैसे क्रॉस करती है, एटमॉस्फेयर के अलग अलग जो कंपोनेंट, जो इंप्योरिटीज हैं, उसके साथ वो मिक्स होकर उस चीज को पूरी तरह से गंदा कर देती है। यानी जो रेन वाटर जो साफ होना चाहिए था वो गंदा हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अबाउट एसिड रेन। सो एसिड रेन इज ऑल्सो ड्यू टू बिकॉज ऑफ दीज इंप्योरिटीज। खैर, अगर हम लोग इन सभी चीजों को हटा भी देते हैं, तब भी हम लोगों को ये दिमाग में रखना जरूरी है कि व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। तो हम लोग अगर एग्जाम में लिख रहे हैं तो एग्जाम में क्या क्या लिखेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयर आर 3 मेन सोर्सेज ऑफ वाटर, दैट इज द रेन वाटर, ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर। Now let's understand what is groundwater in a little bit detail. But before that, we have to understand for this surface water also. So surface water is the water which we use to obtain as on the surface of the earth. हम लोग के धरती के surface पे जो पानी हम लोग को मिलती है as a river water, river, lake, ponds or any other water body, they are known to be as surface water. They've been used in a huge amount earlier, but now we are more dependent on the groundwater which we used to take out by pouring or the well or something like that. So what is actually this groundwater? ये groundwater है क्या असल में? तो जब हम लोग ग्राउंड वाटर को डिफाइन करते हैं, तो बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं द वाटर विच वी यूज टू ऑब्टेन अंडर द अर्थ सरफेस। हम लोगों के अर्थ के नीचे या अर्थ के क्रस्ट के नीचे जो पानी का स्टॉक मौजूद है, उसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड वाटर। तो जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद जो बारिश का पानी है वो मिट्टी से रिस के वो नीचे की तरफ जाकर इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों के धरती के इंटरनल पोर्शन में कोर है जो कि सॉलिड स्टेट में है, फिर इसके बाद अगर देखते हैं तो फिर आउटर कोर है जो कि लिक्विड स्टेट में है, और इसके बाद हम लोग देखते हैं मेंटल का पोर्शन है जो कि हार्ड रॉक स्ट्रक्चर है, और इसके बाद आता है हम लोगों का क्रस्ट। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े पॉकेट्स हैं जहां पर कि वाटर स्टोर होकर रहता है। जैसे जैसे पानी मिट्टी के नीचे जाती है, एज वी नो फॉर दिस थिंग, सॉइल इज पोरस। जो सॉइल है वो उसमें छेद होती है, वो कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, वो कोई रॉकी स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसमें जगह है। तो जब पानी उसमें से क्रॉस करता है वो नीचे जाकर उस हार्ड सरफेस में जाकर कलेक्ट हो जाता है, जिसके आगे वो और क्रॉस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो वाटर का जो ये कलेक्शन है या वाटर का जो ये प्रेजेंस है, इसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड वाटर। एंड वी यूज टू डिग दिस ग्राउंड वाटर बाय डिफरेंट मेथड्स। तुम्हारे घर में ट्यूबवेल होगा या फिर वाटर पंप होगा। तो ये कैसे किया जाता है? असल में हम लोग ड्रिल करते हैं, हम लोग मिट्टी के नीचे ड्रिल करते हैं, एंड देन व्हेन वी रीच टू द वाटर देन वी स्टार्ट पंपिंग आउट। हम लोग उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। एंड एज वी आर डूइंग सो, जैसा जैसा हम लोग इस करते चले जा रहे हैं, इससे भी एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है हमारे धरती पर। आज हुआ क्या है कि जब हम लोग पानी को कंटिन्यूअसली ड्रिल आउट कर रहे हैं, यानी पानी को हम लोग जैसे जैसे धरती से बाहर निकालते चले जा रहे हैं, धरती के नीचे वाटर की कमी होती चली जा रही है, पानी का लेवल जो है वो घटते चले जा रहा है। यहाँ पे वाटर लेवल नीचे चली जा रही है। वाटर लेवल या वाटर टेबल कहते किसको है? पहले इसको समझ लेते हैं। वाटर टेबल का मतलब होता है द लेयर अंडर द अर्थ क्रस्ट वेयर वी कैन ऑब्टेन वाटर। हम पानी को जिस लेवल पर ग्राउंड के नीचे ऑब्टेन करते हैं उसको कहते हैं वाटर टेबल। ठीक है, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकती है। कहीं पर 15 फीट्स पे हम लोगों को पानी की अवेलेबिलिटी हो जाती है, कहीं पर हमको 25 फीट्स पे अवेलेबल हो जाती है, कहीं पर 40 फीट्स पे हो जाती है, और कहीं कहीं पर अगर देखा जाए तो 100 फीट्स पे भी पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का वाटर स्टॉक हमारे धरती के नीचे मौजूद है और उसका वाटर टेबल कहां पर है। तो आज ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण हम लोगों ने चारों तरफ कंक्रीट बिछा दिया है, हम लोगों ने घर बना लिए हैं, बिल्डिंग्स बना लिए, अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन कर लिए हैं, रोड्स बना लिए हैं, चारों तरफ से हम लोग अपने सॉइल को पैकअप कर दिए हैं, जिसके कारण हो क्या रहा है, जब बारिश
बारिश होती है, तो बारिश का पानी मिट्टी में वो नहीं जा पाती है, मिट्टी के अंदर वो जा नहीं पाती है, जिसके कारण जो वाटर स्टॉक अंदर मौजूद है वो फिर से रिजुविनेट नहीं हो पा रहा है, वो फिर से रिफिल नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसके अगेंस्ट में हम लोगों का कंजम्पशन डे बाय डे इंक्रीज होते चली जा रही है, हम लोग डे बाय डे उस पानी को कंज्यूम करते चले जा रहे हैं, जिसके कारण हो क्या रहा है, आज धरती पर पानी की कमी होती चली जा रही है। और ये चीज हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो वाटर टेबल अगर डिक्रीज हो जाता है, वाटर टेबल अगर बहुत नीचे चली जाती है, तो पानी की हम लोगों को कमी हो जाएगी। जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत बड़े बड़े जो भी शहर हैं, उन सभी शहरों में वाटर टेबल 100 फीट से भी नीचे चला गया। कुछ ऐसे भी शहर हैं जहां पर के 150 या 200 फीट पर भी हम लोगों को पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी मेजर कंसर्न फॉर अस। नाउ let's move to the next topic, and we are going to see for the water cycle. So what is water cycle? As earlier I said this thing that our earth is a very unique planet. हम लोग ने जैसे समझा पहले कि हमारा धरती जो है वो एक बहुत ही यूनिक प्लानट है, और इसके ऐसे तो बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन हम एक रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंटली बताए वो है क्या, कि हमारे धरती पर पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो अपने तीनों ही स्टेट्स में मौजूद है। यानी वी कैन ऑब्टेन वाटर इन इट्स ऑल थ्री स्टेट्स, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। And this water cycle is actually the representation of that presence of water in its all three states. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये वाटर साइकिल जो है वो एक एग्जाम्पल के रूप में है, या फिर एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग बताता है कि हाँ, पानी की प्रेजेंस हमारे धरती पर उसके तीनों ही फॉर्म्स में मौजूद है। तो वाटर साइकिल है क्या? तो एक्चुअली वाटर साइकिल इज अ कंटिन्यूअस कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स थ्री स्टेट्स one by one due to the different factors. Okay, so in the atmosphere it continuously goes on and on and on, and due to this only we used to obtain that water is present on the earth's surface in its all three states. So you can see this thing that the water from the sea or ocean gets evaporated. जो समुद्र के ऊपर में जो पानी है, समुद्र या महासागर हम बोल रहे हैं क्योंकि ये सबसे बड़े सोर्स है वाटर के, या फिर प्रेजेंस है वाटर का, यहाँ पर रेट ऑफ इवापोरेशन भी सबसे ज्यादा होता है। तो जो ये इवापोरेटेड वाटर है वो जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ती है वो धीरे धीरे कंडेंस होती है, कंडेंस होकर वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होकर क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेती है। और वो क्लाउड डिपेंड करता है किन जगहों पर प्रेसिपिटेशन कर रही हैं। अगर वो पहाड़ों के ऊपर प्रेसिपिटेशन कर रही हैं तो वो स्नोफॉल करेंगी, अगर वो प्लेन लैंड पर प्रेसिपिटेशन कर रही हैं तो वो रेन वाटर के रूप में आ रही है। तो अगर स्नो भी है तो स्नो जो है वो सॉलिड स्टेट हो गया। लेटर ऑन वो स्नो जो है वो धीरे धीरे करके ग्लेशियर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ग्लेशियर्स जैसे जैसे पिघलेंगे वो लिक्विड वाटर लेकर आएगा। रेन वाटर जो कि धरती के सरफेस पे आ रही है, that also used to flow over there and again reaches to the sea and ocean, and like this phenomena continuously goes on and on and on. So we can observe this thing that evaporation, condensation, and melting, these all processes continuing on the earth's surface with the change in the temperature and the climatical condition, and this maintains the balance of water on the earth. But again, as I will say that due to our interference we are changing, or we are causing some kind of alteration in this. Now let's come to the next topic where we will understand about the water scarcity. तो हम लोगों ने पानी के इंपॉर्टेंस को समझा, हम लोगों ने पानी के कन्वर्जन को समझा, तो इसके साथ साथ हम लोगों को ये भी जानने की जरूरत है कि पानी की कमी भी है। तो हम लोगों के पास जो फ्रेश वाटर का स्टॉक है, जो अवेलेबल वाटर स्टॉक है, दैट इज वेरी वेरी लेस। सो जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है उसका सिर्फ और सिर्फ 0.02% ही हम लोगों के पास अवेलेबल है। और इस पानी को भी अगर हम लोग सही तरीके से कंज्यूम नहीं करेंगे तो हम लोगों के पानी की कमी हो जाएगी। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंडीशंस व्हिच वी कैन ऑब्टेन, और वी कैन सी दैट ड्यू टू water lacking of, or due to the scarcity of water used to be observed. So at different places we can observe that due to the scarcity of water there is political fight, or there are social differences, there can be economical crisis, and so many different kinds of effects can be understood due to the water scarcity. क्योंकि पानी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी लिविंग बीइंग को सरवाइव करने के लिए।
If you are not obtaining the water in the right amount, if you are not getting the water in the right amount, then you will not be able to do your works in a proper manner. So to perform the work in a good way, to perform the work in a right amount, you need to have the water. So that is the major thing which you have to understand. So what are the major causes of water crisis? ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसके लिए हम लोग वाटर क्राइसिस को देख सकते हैं? तो सबसे पहला रीजन तो इसमें ये आ जाता है कि ओवर यूज ऑफ वाटर। जब हम लोग पानी का एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर पानी की कमी हो जाएगी। Then the pollution of water. When water gets polluted, then most of the water which are available to us, that is also become useless for us. We are not going to use it, use that polluted water for us. So we need to understand this thing. If we are polluting water, we are actually destroying water. Even that the water is present over there, we are not going to use it. Next, we have to understand the conflicts between the states and nation. जब झगड़े होते हैं, कुछ देशों के बीच में झगड़े हैं या कुछ राज्यों के बीच में झगड़े हैं, इसके कारण भी पानी का जो फ्लो है उसको रोक दिया जाता है। जैसे कि कोई नदी है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट क्रॉस कर रही है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री वो क्रॉस कर रही है, तो उन दोनों देश या उन दोनों स्टेट्स के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, उसके कारण वहां पर वाटर को रोक दिया जाता है, जिसके कारण भी वाटर स्कैर्सिटी हो जाती है। Next we can see for that the drought which is there, that the सूखा पड़ जाता है, जब कहीं कहीं पर पानी की बिल्कुल भी कमी हो जाती है। जैसे बारिश की पानी वहां पर नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो पा रही है या बारिश कम हो रही है, तो वहां पर भी वाटर स्कैर्सिटी हम लोग देख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ह्यूमन इंटरफेरेंस है। हम लोगों के खुद के अलग अलग बिहेवियर्स के कारण, हम लोगों के खुद के अलग अलग एक्टिविटीज के कारण हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होती चली जा रही है और इसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वाटर का रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हाँ, ये चीज समझने की जरूरत है, अगर वाटर का रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो रहा है तो प्रेसिपिटेशन भी उसी तरह से इंक्रीज हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, या प्रेसिपिटेशन रेगुलर अमाउंट में हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पर अलग अलग फैक्टर्स आ जाएंगे जो इफेक्ट करेंगे कि कहां पर प्रेसिपिटेशन होना है, यानी कहां पर बारिश हो रही है, कितनी बारिश हो रही है। तो ये सभी भी चीजों को हम लोगों को समझने की जरूरत है। नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड फॉर दिस थिंग दैट द ग्राउंड वाटर गेट्स पॉल्यूटेड। इट्स नॉट ओनली दैट वी आर पॉल्यूटिंग the surface water, we are also polluting the groundwater. And if the groundwater gets polluted by different kinds of chemicals and different kinds of harmful components, then again it is going to be very very dangerous for us. तो ये चीज हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो पानी की स्कैर्सिटी को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। Now, if there is a continuous scarcity of water, मान लो कि पानी की continuous scarcity है, तो कहां पर हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है? So again, everyone knows for this thing that the very first thing which we will see that there will be very less amount of water for our drinking purpose, which is very very important for our body. There will be hunger. पानी की कमी होगी तो वहां पे भूखमरी हो जाएगी, क्योंकि किसान खेती नहीं कर पाएंगे, तो अनाज नहीं उगेगा तो हमारे पास खाना नहीं होगा। तो इस चीज को भी हम लोग को समझने की जरूरत है। फिर हम लोग देखते हैं डिजीजेस, काफी सारे तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसा कि मैंने बताया भी है इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में। सैनिटाइजेशन इशू, साफ सफाई करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग वाटर का इस्तेमाल करते हैं धोने के लिए, साफ करने के लिए, अलग अलग तरह की चीजों को। नेक्स्ट वी विल सी द पॉवर्टी विल बी देयर, दैट व्हेन वी विल सी फॉर दिस पॉवर्टी, देन इट इज एक्चुअली ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर ओनली। जब पानी की कमी हो जाएगी, जब पानी कहीं पे कमी हो जाएगी, तो वहां पर जिन लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे वो किसी न किसी जगह से पानी को खरीद सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होंगे वो उस पानी को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या जिनके पास पैसे कमी होगी वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और जब वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, देन क्या होगा, वहां पर उनके पास पानी नहीं रहेगा फर्दर यूजर्स के लिए। नेक्स्ट वी विल सी फॉर दैट माइग्रेशन। तो लोग जो होंगे वो एक जगह से दूसरी जगह तक माइग्रेट करेंगे। अगर पानी की कमी होती रहेगी तो लोग उन सब जगहों पे जाने की कोशिश करेंगे जहां पर कि पानी की अवेलेबिलिटी है। तो लैंड्स बेयर आउट हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, और कुछ ऐसे इलाके जहां पर कि पानी की अवेलेबिलिटी है वहां पर ओवरलोड हो जाएगा, जिसके कारण काफी सारे दूसरे तरह के प्रॉब्लम्स आ जाएंगी।
फिर इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो डिस्ट्रक्शन इन द हैबिटेट्स में आ जाएगी। तो हम लोगों के जो इन्वायरमेंट है, हम लोगों का जो बायोस्फीयर का जो जो कंडीशन है, वो काफी सारे तरह के प्लांट्स को, एनिमल्स को सस्टेन करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर वाटर की प्रेजेंस नहीं होगी तो हम लोगों का बायोस्फीयर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बायोस्फीयर में अगर कमी आ जाएगी या बायोस्फीयर में किसी तरह का कोई इम्पैक्ट आएगा तो वो हम लोगों के इकोसिस्टम को डिफेक्ट करेगा। और अगर इकोसिस्टम डिफेक्ट होगी तो वहां पे जो हैबिटेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जो बायोडाइवर्सिटी हम लोग देख सकते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इन सब चीजों को हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो इन सब तरह के इफेक्ट्स ना हो तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पानी को बचाना है। अगर हम लोग पानी को बचाते हैं तो वो हमारे लिए ही होगा, बिकॉज वी आर सेविंग द वाटर नॉट फॉर एनीवन एल्स, वी आर सेविंग द वाटर फॉर आवर ओन लाइफ, because water is only the life, and if there is no water then there will be no life. So we need to understand this thing. Now if there is a lot of scarcity of water, अगर पानी की बहुत कमी हो जाती है अलग अलग कारणों से, चाहे वो लेस रेनफॉल हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, या जिस भी इफेक्ट के कारण अगर कहीं पर पानी की कमी हो जाती है तो वहां पे सूखा पड़ता है। और सूखा किसी भी तरह से अच्छा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब अगर कहीं पे लैंड ड्राई हो जाएगी, अगर लैंड में सही अमाउंट में पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा, मॉइस्चर नहीं होने के कारण प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे, प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे तो फूड नहीं होगा, फूड नहीं होगा तो बाकी ऑर्गेनिज्म नहीं हो पाएंगे। तो सभी जो ये पूरा का पूरा जो फूड चेन है, पूरा का पूरा जो फूड वेव है वो डिस्ट्रक्टेड हो जाएगा, वो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स वहां पर आएंगे। तो अगर पानी की कमी हो जाती है तो वो हर ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इंसानों को ही इफेक्ट करेगा, वो हर तरह के प्लांट्स, एनिमल्स को वो बुरी तरह से इफेक्ट करेगा, जहां पर कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ सकती है या आएगी। लेकिन हम लोगों को यह भी समझना चाहिए कि कहीं कहीं पर ऐसा भी देखा जाता है कि काफी ज्यादा बारिश हो गई, और अगर कहीं पे काफी ज्यादा बारिश हो जाती है तो उस कारण फ्लडिंग हो जाती है, बाढ़ आ जाता है। तो बाढ़ अगर कहीं पे आ जाता है तो भी वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ही क्रिएट कर देता है। जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है उससे काफी ज्यादा पानी वहां पर मिल जाता है। अच्छा, एक चीज और भी याद रखना, जब हम लोग फ्लड पढ़ते हैं या जब हम लोग बाढ़ को समझते हैं, जैसे कि अभी हम लोग ऊपर में देखें सूखा, तो अगर कहीं पे सूखा पड़ता है तो वो तो वाटर की स्कर्सिटी दिखाती है। क्या पता है तुम्हें कि अगर कहीं पे फ्लडिंग होती है तो भी वहां पे पानी की स्कर्सिटी हो जाती है? अब ऐसा कैसे? क्योंकि चारों तरफ तो पानी पानी है। लेकिन इसमें समझने की जरूरत यह है कि अगर वाटर की प्रेजेंस चारों तरफ है भी, लेकिन फ्रेश वाटर कहाँ है? वो फ्रेश वाटर तो तुम्हारे पास नहीं है। You are not getting the clean water. You are not getting the fresh water over there. The whole water contains so many different kinds of germs and mud and all the kinds of impurities over there. You are not able to drink that water. तुम उस पानी को पी नहीं सकते हो, तुम उस पानी का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। So over there also you will observe that water is under scarcity only. वहां पर भी तुम देखोगे कि पानी स्कर्सिटी में ही है, पानी की स्कर्सिटी ही वहां पर है। तो इस चीज को हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो जब हम लोग फ्लड देखते हैं तो फ्लड भी लाइफ थ्रेटनिंग है, फ्लड भी जो जो वाटर स्कर्सिटी का कंडीशन लाती है उसमें भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट रीजंस व्हाई वी यूज्ड टू ऑब्जर्व फ्लड। इट कैन बी नेचुरल, इट कैन बी मैन मेड, बट इन व्हाटएवर मैनर that presence of excess water is also not good for us. So ultimately what we conclude with, we are concluding with this thing that we should need to conserve water, because water is a very important resource, and if we are not consuming we are not conserving the water in a right amount, then we will be able to not sustain our life in a good and a proper way. अगर हम लोग अपने लाइफ को सही तरीके से बिताना चाहते हैं, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करे, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे लाइफ में हर तरह की चीजें जो है वो सही तरीके से काम करे, तो हम लोगों को अपने रिसोर्सेस को बचा कर रखने की जरूरत है। और उसी में से एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हम लोगों के लिए प्योर वाटर। अगर प्योर वाटर हमारे लिए नहीं होगा तो हम लोग अपने लाइफ को सही तरीके से सस्टेन नहीं कर सकते हैं। सो टू मेंटेन आवर लाइफ इन अ राइट अमाउंट, टू मेंटेन द लाइफ in a correct way, we need to have the water in the right amount, and we should save it. We should not drain it out. If we will drain it out, then we will not be able to obtain the water in our future. Now, one of the method of the conservation of water, that is the rainwater harvesting.
वैसे तो काफी सारे मेथड्स हैं, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बेसिक सा टॉपिक है जो इस चैप्टर में दिया हुआ है, सो वी कैन अंडरस्टैंड फॉर दैट थिंग. सो व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एक्चुअली अ मेथड वी कैन स्टोर द वाटर व्हिच वी यूज टू ड्रेन आउट ड्यूरिंग रेन. जो कि आज हर किसी के घर पे जो घर है, घर इस तरह से बनाया जाता है कि जो बारिश होती है तो बारिश का पानी घर के बाहर निकल जाए, और जब घर के बाहर वो निकल जाती है तो वो ड्रेनेज सिस्टम से होते हुए वो रिवर्स में या लेक्स में होते हुए वो या तो वो सी या ओशन में चली जाती है. तो इससे होता क्या है कि हमारे ग्राउंड वाटर की कमी होती चली जा रही है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस किए हुए हैं. सो इफ यू वांट टू रिस्टोर दैट वाटर, then one of the method is that you can just collect the rain water. तो इसमें करना क्या है, जो हम लोग ड्यूरिंग द रेन जो हम लोग पानी बाहर फेंक देते हैं, जो हम लोग अपने अपने घरों से बाहर उसको फेंक गिरने देते हैं, अगर उसे हम कलेक्ट करते हैं, अगर उसे हम लोग घर के नीचे एक बड़ा सा टैंक बना लें और उस पानी को वहां पर कलेक्ट कर लें, तो यही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. क्योंकि अब इस वाटर का हम लोग फिर से रीयूज कर सकते हैं, इस पानी को हम लोग बर्बाद नहीं जाने देंगे, इसको हम लोग रीयूज कर लेंगे, इसको हम लोग गार्डनिंग के लिए पर्पस में यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग क्लीनिंग पर्पस में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इसको हम लोग सही तरीके से प्यूरिफाई कर लें तो ये हम लोगों के ड्रिंकिंग पर्पस को भी सेटिस्फाई कर सकता है. सो अ लॉट ऑफ वाटर कैन बी सेव्ड. तो जब बारिश होती है कहीं पर, जिन जिन जगहों पे अच्छी खासी बारिश होती है, वहां पर हम लोग ये फेनोमेना परफॉर्म करके अपने नेचर में पानी को सस्टेन कर सकते हैं, हम लोग अपने नेचर में पानी को कलेक्ट करके रख सकते हैं. सो वी कैन यूज दैट वाटर विदाउट वेस्टिंग इट ओवर, जस्ट टू गो ड्रेन इट आउट. हम लोग उसको ड्रेन आउट होने से बचा सकते हैं और अपने ग्राउंड वाटर को भी सेव कर सकते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हो हमें एक ये पिक्चर का यूज किया है जहां पर कि जो फ्रेश वाटर है उसको ड्रेन आउट कर लिया जा रहा है. ड्रेन आउट करने का यहाँ पर मीनिंग ये नहीं है कि वो धरती के बाहर चली जाएगी, इसका मीनिंग ये है कि जो हम लोगों के धरती के अंदर जो फ्रेश वाटर का स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा. अगर सारा का सारा फ्रेश वाटर अगर सी या ओशन में जाकर मिक्स हो जाती है तो वहां पर प्रॉब्लम क्या होगा कि वो सलाइन हो जाएगी, और सलाइन वाटर का हम लोग सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. फिर से उसको इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस करके, डिस्टिलेशन प्रोसेस को फॉलो अप करके वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करके यूज करना एक एक्सपेंसिव कंडीशन है जिसको कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. सो वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट व्हाटएवर मेथड वी आर यूजिंग, वी नीड टू सेव द water, because water is life and life is very very precious for each and every one for us. So with this note, I'm ending up this chapter. Over here you can see a small animated video at the end of this chapter right now only, where we can discuss about water and some of its basic components and its uses with some simple animations. Okay, please wait for the animated video. Ankit is a smart child who studies in 6th grade. His grandfather is a retired officer from the Environment Department. Ankit was inspired a lot from his grandfather. Grandpa's teachings had raised a lot of curiosity in Ankit's mind regarding the environment. Once, on Ankit's suggestion, all his classmates along with his teacher went to the beach to clean it. Ankit's best friend Pawan and his sister were also among those kids. Cleaning of the beach took a lot of time. After hours of hard work, the children were fatigued and became hungry. Their teacher had already brought bread and vegetables for them from school itself. The children were so hungry that they finished all the food in split of a second. But then a problem arrived. Oh, I forgot to bring water. Madam, I have a bottle of water, but it won't be enough for everyone. Teacher thought for a moment and then started smiling. Students, today I will take an exam of yours. All of you have to arrange drinking water from nature for each one of us. But madam, there is not even a house anywhere nearby. And there is so much salt dissolved in the sea water.
We can't even drink this water because it can be highly dangerous for our health. Correct, Sonia. It is difficult. That is why I'm calling it an exam. All the kids got excited. And Teacher, water is also present underneath the ground. If all of us dig the ground, we will find water. oh no, we are already tired after so much of hard work. Now do you want to take our lives? Jatin, your idea is nice, but it's pretty difficult. Think of something else. Jatin smiles and starts thinking again. An idea crosses Pavan's mind and he said, "We can do it easily. How so? See, there is so much water in the ocean." Stupid, haven't you heard? The seawater contains a lot of salt and can be fatal for us. I heard that, but we can extract drinking water from that. But how? For that, first we need to wash the utensils we have used. Let's wash those big bowls. Jatin, do one thing. Go there and bring some firewood. Come, Jatin. You and some more children come with me and we will bring some firewood. Rest of the children washed the utensils and in a while, firewoods were also arranged. Meanwhile, Pavan fills the bowl with seawater. He takes matchbox from the teacher and ignites the firewood. With Ankit's help, he puts the bowl filled with water on the fire and covers it with a lid. Well done, Pavan. I got it. The water will evaporate and the salt will remain in the bowl. And as the lid is cool, the steam will hit and would turn into the water again. And this water will be drinkable. Excellent, Sonia. But there is still an issue. The cool water will fall back in the bowl. Then how will we drink it? There is a solution to this issue as well. Ankit, please help me a bit. Ankit took some sticks and lifts the lid. Teacher helps him with a cloth. The teacher makes a slope with the help of the sticks so that the lid is tilted from which the water can slide down on one side where Ankit puts another bowl on that side. In a while, fresh water starts getting accumulated in the other bowl. Well done, children. You have passed the exam together. Well, do you know that the drinking water which is supplied to our houses also comes through these kind of processes only? Madam, let me tell this. All these processes depict the water cycle. The seawater evaporates and goes up due to the sunlight and forms clouds in the atmosphere. When this water vapor cools down, it falls back on the earth in the form of rain and snow. If it becomes extremely cold, and yes, rainwater or the water from melting snow makes rivers from which we get drinking water. Very good. Okay, tell me, does all the water flow back to rivers? Madam, there is water underneath the ground as well. Some of the water drains out to rivers, but the rest is soaked up by the earth. We can use that water with the help of wells and hand pumps. And the water flowing in the rivers mixes with oceans or seas again. Absolutely. And this is how the water cycle keeps going on and on. Children, well done. All of you have understood the subjects taught to you. Now, drink water one by one. Then, we also need to return. I will give all of you an ice cream treat on our way back.
Yay! Ankit was really happy from yesterday's cleaning campaign. He was pondering over the importance of water since then. Today is Sunday. His friend Pawan had asked him to come over his place for playing. Ankit loves to both play and study with Pawan. This is because Pawan is bright in both studies and sports. Although Ankit dislikes his habit of carelessness, Ankit's parents owned a dairy farm. When Ankit reached Pawan's house in the evening, he was taking a shower. After waiting for some time, Ankit went to the courtyard. Pawan's mother was watering the plants over there. She seemed to be a bit tensed. What happened, Auntie? Why do you look tense? Oh, Ankit, come. See, I had thought of creating a fine garden in my courtyard. Just a week ago, I have planted these plants and I take so much care of these flowers and water them every day. All the plants are growing, but I don't know why these thorny plants are dying. Auntie, why do you water these plants every day? These thorny plants belong to the species of cactus and they need very less water to survive. Perhaps these must be dying due to excess of water. Oh my God. And see, I water them every other day thinking that they may need more water. No, Auntie. Have a look. The whole flower bed is full of water. It is actually like floods for these plants. This is a correct simile. If water is more than the need, it can do a lot of damage as well. Even excess rainfall causes floods, drowning houses, streets, and even forests. Yes, Auntie. During floods, water seeps into the tiny pores present in the soil and replaces the air present in these pores. Because of this, organisms living in soil and the roots of trees could not breathe and eventually dies. Many living beings also die because of drowning. Crops are ruined. Just like that, these flower beds seems to be flood prone. From now on, I will water these cactuses once in a few weeks only. Just then, Pawan, who was listening to Ankit's conversation for a while, comes from behind. No, mother. Watering them once or twice a week is necessary. Otherwise, they will get dry and eventually die. Just like the time of drought, when there is a scarcity of rainfall, rivers and ponds dry up. It's a big problem for the areas where groundwater level is very low. Wow. Mister, you know everything. Still, you waste so much water by taking shower for hours. Is it right? Rightly said, Ankit. Answer him, Pawan. Actually, Mother, what will happen if I only use a little more water? See that? So much water gets wasted on our dairy farm. Pawan, don't you think we should do something about that first? But we are helpless in that. Water is needed to bathe the animals and wash their stables. Auntie, I have a solution to fix this issue. You can use all this water again by filtering it. Filter? We have a water filter at our home, but that is way too expensive. How are we going to install a filter on such a large scale? Ankit, I think it's a good idea though. We can filter water naturally as well. Why don't we show the process which we learnt while doing the science project to her? Pawan and Ankit brought a water bottle from inside. Then Ankit cuts it from the bottom. Both kids placed a cloth at the top of the bottle first. Then, one by one, they made layers of coarse sand, charcoal, fine sand, and gravel till the top. Pawan pours dirty water in it. In a while, water droplets start falling from the mouth of the bottle. See, Auntie, you can make such a natural water filter on a large scale. With the help of this, water can be reused. Well done! This seems to be an old but nice method.
Why don't we think of something even bigger? When it rains, a lot of water drains in a small time period. Tell me, how can we use that water? Yes, it reminded me of rainwater harvesting. Mother, please tell us a bit more on rainwater harvesting. The objective of rainwater harvesting is that water, instead of getting wasted, could get harvested for future use. If we assume the roof as a funnel and attach a pipe to it to collect water, a lot of water can be harvested in this way. Now, you both think and tell me, what shall be done? Mother, we can build a huge tank where rainwater will get collected, which can be used at the time of need. The tank shall be covered all the times so that the water doesn't get evaporated. Yes, absolutely. We can do one more thing. The rainwater which gets collected on the roof can be transported through a pipe to be a small tank which can be further connected to groundwater. By this method, rainwater will get mixed with groundwater. If we keep the floor and roof of the house slanting towards the tank, then the rainwater of the surrounding area will also seep into the earth. By doing this, we will not face water scarcity problem throughout the year. Alright kids, I will call Vishnu plumber tomorrow only to get the systems installed. We will welcome the rain together this year. Ankit brother, if the lesson on saving the environment is complete, shall we go to play?